centre of the court, and then waiting for that shorter lift from Alacha to finish it off. And let's go to Mumbai Indians. Start of the tournament, रोहित शर्मा से पूछा गया था कि सारे मैचेस मुंबई में हो रहे हैं. Do you think it is unfair on other teams? And his reply was, teams should, build stadiums in their city if that's possible. That was his reply, and see what happened. So I don't know. Cricket is a funny old game. तो भाई लोगों, जो भी देख रहे हो ये, हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. We'll talk about the teams, their post season की 3 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. Firstly is what went wrong, basically क्या गलत हुआ. We can have takes from Vignesh, Vikas, players who shown in this unsuccessful season for the franchise, and the third thing is prospects for the future कि next year उनकी अपने stadium में वो जाएंगे, वापस घर जाएंगे, not going to be in Mumbai. So maybe their players that they've selected is maybe more suitable to their home conditions rather than playing in Mumbai. So we'll see how their prospects line up for the next year also. तो as I said, विकास और मेरी ज़्यादा बात नहीं होगी, तो विघ्नेश से स्टार्ट करते हैं भाई. विघ्नेश, मुंबई इंडियंस at number 10, what went wrong bro? First of all, it started with the auctions. जैसे हमने auctions के समय भी discuss किया था. But as you say कि मतलब when you end a season with just 4 wins, you end last, so everything that could go wrong has gone wrong for Mumbai Indians, creating new unwanted records. 8 out of 8 losses opening इसमें. मतलब being a Mumbai Indian fan, आपको था कि यार 5 के बैच तो अब हम दुनिया हिलाएंगे, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, but pretty much sort of the only place उन लोगों ने दुनिया हिलाया तो आरसीबी अंदर आया. Apart from that, it has been a season. अभी we are not going there. वो लास्ट में आएगा शो में. डीसी का लास्ट डिस्कस करना है हम लोग को. It has been a season to forget for Mumbai Indians, right from जो मतलब clarity होती है Mumbai Indians में, that was the biggest thing lacking this time around. Rohit Sharma did not appear that sort of decision maker who backs people. That there are a lot of so many players जो शायद second half में shine किए. They were not given enough chances in the first half. 1-2 games में they played with 2 overseas players, and looking at their Indian core, मुझे मतलब समझ नहीं आया कि किसकी हिम्मत थी कि sort of sticking to 2 overseas players. It made zero sense to anyone. Yeah. And then it's for the first time that Mumbai has failed to qualify for 2 successive seasons. And at the start of 2020, we were thinking this is going to be an era of Mumbai Indians जहाँ पे उन लोग 7-8 टाइटल एक डेकेड में जीतेंगे. But it has been a far cry from it. Yeah. Vikas, what went wrong for Mumbai Indians? What went wrong? I think हम हर बार बोलते कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, and you take their openers, ईशान किशन, रोहित शर्मा. That's there. I mean, वहाँ पर समझ में आ रहा है कि तुम क्यों अच्छे नहीं खेल रहे हो और तुम्हारा क्यों अच्छा तुम्हारे नीचे की टीम सारा डैमेज कंट्रोल में चली जाती है, and not using बुमराह properly. I think that was the biggest concern. ईशान किशन, रोहित शर्मा and जसप्रीत बुमराह, I think जो तुम्हारे main stays होते हैं उनका परफॉर्म नहीं करना, I think that was the main reason. Apart from that, बीच में भी टीम सिलेक्शन भी काफी खराब था. I think ब्रेविस को इतने देर बाहर रखना, that made no sense. Bubble break. But नहीं, वो तो बबल, हाँ वो बबल का था उसको. But was it really? Yeah, it was. That's the only explanation. Bubble break तो था. मैं ये पूछ रहा हूँ, was it asked by Devol Brevis? मतलब Devol Brevis ने बोला. Why would a young guy not want to play यार? वो तो होगा कुछ, मतलब उसका रहेगा कुछ. I think there was no other reason to drop Brevis. I think वो जब that came through तो समझ में आया कि क्यों drop हुआ है वो. Otherwise तो हमको नहीं समझ में आया था क्यों drop हुआ Devol Brevis. He was great. Yeah, I think for me overall planning में बहुत ज़्यादा mistakes हुए इस बार, and बुमराह को काफी defensively use किया गया, and that's there. Mumbai is right there. Okay, तो मैं I think going to विघ्नेश ने जो बोला था, विघ्नेश की दोनों बातें जो है मतलब वो I think दोनों बातों से मैं agree भी करता हूँ, disagree भी करता हूँ. दोनों चीजें हैं कि एक तो ये विघ्नेश ने बोला कि it started from the auctions, is where I do agree कि auctions में उनका जो बहुत ही एक वो था कि ईशान किशन को लेना है, तो 15 करोड़ वहाँ खर्चा किया उन लोगों ने. So that is where they went wrong. But in the auctions also where विघ्नेश said कि clarity नहीं दिखी, मेरे को थोड़ी clarity जरूर दिखी मुंबई इंडियंस से कि
and where you always say, right, and this is a good segue into our second topic also, which I'll kick off also, which is their players who's shown also. So we always talk about ki Mumbai ka jo scouting hai, that is so crazy, and again it happened again. Matlab, I know they finished 10th and everything is all right, but for me finishing 10th and finishing second is the same. I don't think बहुत ज़्यादा difference है उसमें. ट्रॉफी नहीं जीते हो तो हाँ यू कैन हैव वट एवर, बट एक ट्रेजेक्ट्री होती है. मतलब पीबीके फिनिशिंग 10th इज मे बी नॉट ऐसा ट्रेजेक्ट्री से गया है. मुंबई इंडियंस का 10th इज अ प्रॉमिसिंग 10th, आई थिंक दिस, बिकॉज वो क्लैरिटी मुझे दिखी. आई थिंक दैट स्काउटिंग सिस्टम हैज वर्कड. तिलक हैज शोन द यंगस्टर्स. जस्ट लुक एट दैट यार. कार्तिकेयन 6 डिफरेंट बॉल्स डाल सकता है वो यार बंदा, विद द सेम एक्शन. सो दैट इज गुड. डिवाल्ड ब्रेविस तो है ही, हमने बात की है उसकी. तिलक है, ऋतिक शौकीन इतना अच्छा उनको नया प्लेयर मिला है कि उस दिन जब वो एक टफ मैच था निकालने वाला, तो एकदम दिमाग से उसने बैटिंग भी की, नॉट जस्ट बॉलिंग. टिम डेविड भरोसा किया 8.5 में. मतलब स्टिल यंग, आई एम जस्ट काउंटिंग हिम देयर. आई एम जस्ट सेइंग दैट scouting system for Mumbai Indians has worked, so that clarity has shown. And if Jofra Archer does join them, and I think a good spin addition to them also, I think this team is rocking, man, next season. Yeah, सब obviously assuming कि वो 2 ऊपर के players fire करे, that is obviously विकास का तो जो point है, that is obviously true. Yeah, players who shown for them, Viggy, who is basically your it has to be looking at a player for the next decade. तिलक वर्मा for sure यार. नंबर 1 बैटर. मतलब कोई अनकैप प्लेयर मुंबई इंडियंस के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर होना बड़ी बात है इन अ टीम फुल ऑफ filled with stars. And Tilak, right from game 1, he looked cut above the rest, and he showed what it takes. And from an India all format captain to be called, he's going to be the next big thing across all formats, is great validation. And जैसे हम मतलब बोल रहे थे कि तिलक वर्मा is going to be the next big thing, to carry that tag along with him and to play that way, it was sensational. And he looked at ease. अब तक मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है कि this guy has sort of any kind of weakness for now. Second season maybe might bring in a different challenge, but for now Tilak Verma definitely looks promising. And the other star जिसके बारे में मैं काफी skeptical था despite MI spending such a huge amount, was Tim David. Why, he's the every bit of Jallad that people were talking about. ये classic ex RCB हो गया ना. Yeah. But someone who was served you well, आखिरी गेम में जिता के गया, तुमको पहुंचा के गया. बिल्कुल. So the numbers didn't lie when they said कि Tim David has one of the best strike rates in last 2-3 years, and he proved that मतलब he is not that $1 million thing जो is a fluke kind of a thing. So and the baton has already passed, I believe, Pollard to Tim David. So that count will be very gung-ho about the next season. Yeah. So continuing with that too, मतलब prospects for the future, मतलब कि what do you think next season is going to be like for Mumbai? Then I'll go to Vikas. Yeah. मतलब Surya's position at if Surya continues to bat at 3, so 4 and 5 might be one position a bit low for both Tilak and Duval Bruvis. So if they could figure out how they can sort of bring them ahead, या फिर कुछ भी अगर हो सकता है, तो these 2 stars are definitely going to shine for Mumbai, say for around 5 to 6 years. 3 पे कौन खेलेगा? अगर 3 पे सूर्या खेल रहा है तो 4 पे तिलक और 5 पे 4 पे तिलक is fine, right? I think. अच्छा. Duval 5 काफी छोटा कम लगता है. नहीं, I think मारता है. ब्रेविस आते साथ देता है. मतलब maybe you can do Kishan की जगह Duval Brevis also, that you can do. And then Tilak can come 3. Surya is already playing well at 4, so that thing you can do also. Then Tilak also fits in, I think. Yeah, Vikas, दोनों चीजें भाई. Players who shown for them and prospects for the future अगले साल. Players who shown for them में कोई secret नहीं है. Basically तुम दोनों ने उन दोनों की बात की है. तिलक वर्मा, Duval Brevis, again Tim David as well. और तिलक वर्मा मेरे को बहुत ज्यादा बात अच्छी लगी, क्योंकि तिलक वर्मा हर सिचुएशन में फिट किया गया. मतलब फिट हो गया मुंबई इंडियंस से, कि उसको छोटा टोटल चेस करने भेजा, बड़ा टोटल चेस करने भेजा. काफी उसने हर बार थ्रू नहीं करवा गया. ऑब्वियसली ही इज अ यंग गाय, हर बार नहीं करवा सकता, बट ही हैज शोन हिज क्लास. ही हैज शोन कि क्या पोटेंशियल है, क्या दिमाग से खेल रहा है. वी हैव सीन हिज शॉट्स ओवर ऐसे
फाइन लेग अंदर वाले शॉट्स फिर वो ऊपर से मार रहा है, देन अगेन यस्टरडेज इनिंग एज वेल, तो उसने हर चीज में वहां पर फिट किया है. सो अगेन जैसे रोहित शर्मा ने बोला ऑल फॉर्मेट वाला प्लेयर, दैट्स डेफिनेटली देयर. एंड आई डू अग्री विद द टीम डेविड वाला स्टेटमेंट विघ्नेश का कि बैटिंग पास हो गया है. आई विल डेफिनेटली सी, आई थिंक वी विल सी पोलार्ड नेक्स्ट ईयर, बट आई रियली डोंट थिंक कि इतना जितना इस साल लंबा चला है, इस साल लंबा खींचा है पोलार्ड, 7-8 मैचेस तक उसको खिलाया गया है. I really don't see कि वो हो रहा है. And talking about the future of Mumbai Indians, अगर वही है तुम्हारे जो प्लेयर्स रिटेन हुए हैं, जो प्लेयर्स बड़े इसमें खरीदे गए, अगर वो खेलते हैं, अगर उनका अच्छा डिसेंट भी सीजन जाता है, then this team is going right at the top again the next season. टॉप 4 में तो डेफिनेटली जा रही है. या मेरे को भी ऐसे लगता है. बट एक क्विक नॉस्ट्राडामस प्रेडिक्शन दूं. Pollard to play the Narayan role for MI next season. टॉप ऊपर घुमा के पॉली. नहीं, not वो कैसा लगता है आजकल तो बैट को बॉल ही नहीं लगता है. अगर आर्चर अवेलेबल है तो फिर पोलार्ड आर्चर को भेजे. आर्चर is a good आर्चर को भेजे ऊपर टॉप. Good. Right guys, that was Mumbai Indians. So yeah, 10th finish is definitely not a good look for a franchise like Mumbai Indians. इतनी बड़ी franchise है जो but I think आज इस पर उनके fans को I think they were also understanding also, मतलब I think it was not like CSK कि उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Whom we will go to the next team is CSK only, but yeah, ending off with MI, it wasn't. I think the fans were understanding also. This is a work in progress team, and मतलब the structures and the basic, the foundation दिखती है कि I think it's being laid as a good foundation, it's a strong foundation. Let's see what happens next year. So that was Mumbai Indians, guys.